Good afternoon. On behalf of ThinkAg, uh, I welcome all the panelists and all the participants. We have, as I can see, more than 222 participants already. So it's really great response to our first event on Apple. We're calling it Apple Tech. So first of all, I would like to thank Junaid from FIL, who kind of conceptualized this whole event and help us get all the participants. So Junaid, thanks very much, and the entire FIL team for partnering with ThinkAg. And of course, we have a lot of Apple experts on this call, but all I want to say that, we want to clearly build an innovation agenda for the Apple industry. As we all know, it's very important industry for the country, and especially for the state like Jammu and Kashmir, Himachal, Uttarakhand, and parts of Northeast. We all know that we have not really taken the industry to its potential. To my knowledge, it is about $1 billion annual turnover industry. And I think there is a belief we can take it to maybe $5 billion and even $10 billion. So it can be a really large industry. And that's where we need participation from all the stakeholders, including the government, the industry, the traders, the farmers, the farmer groups, startups. And that is what we are trying to attempt today, to bring multiple stakeholders together from India and outside India. So that's the whole objective of doing this event. I hope something very useful will come out of it. Depending on the response of this event, we can also do follow-on episodes on the same subject, bringing more stakeholders on the platform. So with that, I'll hand it over to Junaid for his opening remarks. After that, I'll do the introduction of panelists and we'll get into discussion. So with that, over to Junaid. Thank you, Mr. Mathur. I would once again like to take this opportunity to welcome all of our panelists from India and abroad, and from different parts of the industry to this forum. I'd also like to welcome all the participants to what I hope will be a very interesting and aspiring session for all of us. Aspiring because I think all of us in agriculture, in horticulture, in India and the world over, work with a large scale set of aspiration to improve, improvise, and contribute in our individual roles and as companies. Apple is a key horticulture crop in India, which has a vast potential. As the I don't want to be cliched, but as the saying goes, an apple a day keeps the doctor away. So if this is a real potential in terms of the multi-use of apple to the consumer, whether consumed as fresh apple or processed apple or its various forms, I think this forum presents an interesting opportunity to chat through the various opportunities available to the Indian apple industry. We have tried to put together a forum of distinguished panelists from each and every walk of the apple ecosystem, from harvest management to processing to rootstock to progressive farmers to policymakers. I would encourage everybody to have a wholehearted and candid discussion. We are all part of an industry evolving fast globally, and in India, we still have a sizable opportunity to grow the industry multifold. Various estimates, as Mr. Mathur himself put it, peg the industry anywhere between $1 to $1.5 billion. And various estimates also peg the potential of this industry to be a $10 billion industry. I wouldn't put the financial value as a driver of our aspirations to grow. I would put the driver being our intent to improve, whether it is our table variety, whether it is the productivity, whether it is our farm management techniques, whether it is our harvest management techniques, whether it is how we market our apple. We are all part of a common chain involved in this, and I believe there is a tangible opportunity available for this to scale over the next few years, certainly the next decade. Government of India and the various state governments
involved in Apple have also set a very aggressive agenda for improving the productivity of Apple, the farmers' income. But I do believe it is a prerogative of entrepreneurs, professionals, and industry colleagues like us that will drive this change. Without taking too long of everybody's time, I'd like to welcome everybody else once more. Let's have an interactive and great session, and I look forward to the same. Thank you very much. Thank you, Zinat, for very inspiring opening remarks, and really good to have you to partner with us in the series. So before we get started, let me briefly introduce all the panelists. As Zinat mentioned, we have got distinguished panelists from different walks of life, from industry to startups to policymakers to farmers. We have Mr. Azad Ahmed Bhatt, who should be joining us shortly. He was having some problem in joining. He's the Director General for Horticulture at Kashmir. We have Mr. Thierry Ligonier. I hope I announced the name correctly. Thierry is the CEO of Daliwal Group. He's based in France. We have Mr. Jitu Chauhan. He's the founder of School of Modern Apple Farming and co-owner Singh Apple Orchards. He's a progressive farmer, and we very much look forward to hear from you. We have Mr. Ankush Singhal. He's the global category head for fruit procurement at Coca-Cola India. Welcome, Ankush, for joining us. We have Mr. Hitin Suri. He's the joint managing director at Suri AgroFresh. Hitin is someone I've known for almost 15 years. And I think one sentence that I always remember, which Hitin told me, that if you prick my vein, you won't get blood, you'll get apple juice, right? So that is what defines him. You know, he's a through and through an Apple person. Good to have you, Hitin, for this event. And then we have two smart entrepreneurs who have worked a lot in this space. Nitin Gupta, he's the founder of Sequel Innovation, which is developed and developing many solutions around apple harvesting, sorting, grading. He's based in Chandigarh and works very closely with many orchard owners. And last but not the least, Kunal Prasad. He's the co-founder and COO at Cropin. Cropin doesn't need any introduction. One of the, I would say, the flag bearer in the Indian agri-tech ecosystem, which is, and they have digitized millions of hectares of land, not just in India, but in more than 50 countries. And they have also done a lot of work in this Apple space. So welcome to all the panelists. And I think we can get started with the discussion. I see Mr. Azaz Ahmed Bhatt joining us. Sir, you are there on the call? So you're on mute, if you can unmute yourself. Okay, I don't know whether he can hear us. Maybe we can go to him a little later. Yeah, now we can see him. Mr. Bhatt, can you unmute yourself? Okay, I think he is having some problems. We'll probably go to him next. Thierry, in the meantime, we can start with you. The reason being, you bring a very global perspective to this sector. You have seen the Apple industry across the world, and you also have a presence in India. So my question to you is, what are the issues and challenges that you see in Indian Apple industry, and how we can solve some of these challenges? Thierry, over to you. So would you want that before I present Daliwal or not? You can talk about it, Thierry, that would be good. Because, okay, well, first about the issue, to answer directly to your questions. I visited several times India. It's a great country and I like this country, your culture and the people there. What I see is that you have mainly extensive orchards. First, if we speak about production, and one of the issues is that you have, if you want to change the methods of plantation, with high density plantation, for example, one of the problematic will be the land, because you got a lot of small farms
and with extensive orchards, and it's difficult to plant new orchards inside the extensive orchard. So one of the issues is somewhere to find land on a good surface. Also, we can see that there is a very large possibility of planting not especially always good quality trees, and with different type of fruit stocks, with different genetics, which are all genetics in general, and there is no especially uniformity in what people are doing. So that makes at the end another issue is that in the market you have a lot of type of fruits which are not especially good stored, not always in the same quality picking, and so it's very heterogeneous for the consumer to find somewhere a good uniform quality. That's another issue that that has to be challenged. I would say also the infrastructure of storage is very low. There is some logistic, but on that, but it's not enough for all the fruits which are picked. I see also a lot of farmers with not especially good education, not enough education to improve the way of producing, either in consistent production every year, but also in healthy apple to eat with in terms of phytosanitary product in the way they are spraying, and it's difficult to have also a good sprayer because it's expensive, so you cannot run with a tractor to make it clean and better. So it's all those points are some issues that I've seen which are not especially linked to India. I've seen that in a lot of countries in the world, but it's to improve the future on that. It's we have to go with those points. Logistic also, when you go from to Kashmir to Mumbai and to bring some fruits, it's also a long road. So it needs also to bring the fruits in the best quality, in the better condition in the stores. So that's points also which I've seen. I've seen also that in the plant material we can see outside of imports, if we don't know, there are no certificate, there is no certification, no traceability. What are the real varieties that have been bud or graft? What is the real rootstocks? Nothing is clear, and for the producers is something that is blind, and they don't know especially what they plant. Climate is also an issue all over the world. Climate is getting warmer. Issues perhaps not especially on water in Kashmir, but it could be. Illness like canker, like scab, it's an issue by you also. So all those points make that it's not easy, but the challenges are very nice because you are a big country, a lot of consumers, and a big needs of good eating and healthy eating. So that's one issue. Yeah. Great. No, Thierry, that's great. It really demonstrated your deep understanding of Indian Apple ecosystem and talked of multiple challenges: food stock, logistics, storage, traceability, distribution, and definitely we all recognize those issues, and that's the whole point that we want to discuss today. What are the solutions? So before we get into the solution, maybe I can ask Mr. Bhatt. Mr. Bhatt, can you hear us now? If you can unmute yourself. Yes. Good evening to everyone. Good evening, sir, and thanks very much for joining us today. It's a privilege for all of us to have you. Sir, we want to hear from you, given the fact that Apple is one of the key focus crops, even for the government, and there are many government schemes to promote Apple production, Apple productivity, storage, distribution, etc. Would you like to talk about some of the government efforts in this direction? Yes. I will tell a little about our sector in India, especially in J&K. Our horticulture is a viable economical activity in our union territory of J&K in our country, India. Contributes about 8% in GDP and generates about 10,000 crores annually. We say it our backbone in our economical sector. There has been a rapid stride in urbanization
with an increase in population expected to double in 30 years. This has a shift of population from rural to urban areas in search of job due to growth in service and manufacturing sectors. The spectrum of various components in the ecosystem has been changing continuously, and in current scenario, changing dietary habits with increase in income, health consciousness, there is rapid shift from cereal-based diet to this this nutritional diet. So there is a growing demand for horticulture produce. The urbanization is expected to increase, which is a challenge not only for the demand of fruits, but also to various facets of life, like environment. In this context, horticulture plays a pivotal role. Jammu and Kashmir has declared as Agri-Expo zone for apple and other fruits. That demographic natural habitat gives us an opportunity to give diversified fruit crops like apple, pear, cherry, and other stone fruits, and other subtropical fruits like mango, lemon, other citrus fruits. There are so many challenges to this industry here in J&K. We have a low productivity in comparison to advanced countries. Deteriorated conditions is there. Deep-rooted seedlings we have introduced new varieties very late. Poor performance of traditional commercial cultivars in respect of color, shape, or aroma, taste. Poor canopy management. We have competition with developed countries like China, America, Japan, New Zealand, Australia. We have inadequate quality planting material. We have insufficient facilities in value addition. We are lacking in cold storage and cold chain. No doubt we are trying, our government is trying to cope up these challenges. We have strategies to overcome these challenges. That from several decades, stagnation in productivity has remained a point of concern, and short-term strategies are not working to overcome this stagnation. There is an essential requirement to make a long-term intervention for the enhancement in productivity and value addition of the produce. We have to adopt some new techniques, like we have to change our plantation in a phased manner. Our old plantation, our senile orchards, we have to convert them in new varieties. We have to introduce best varieties which are having regular and prolific bearers, which are having a good quantity of juice percentage. We have to expand our varieties. We have to see the demand of consumers. We have to identify such varieties which have demand in market, best demand. That varieties which have outstanding merits in the market. We have to develop infrastructure facilities for multiplication of certified planting material, root stock, Sian cultivars for use in future orchard establishment. Promoting high density plantation by using suitable root stock, regular bearing capacities, super type for reducing the gestation period and optimizing horizontal as well as vertical expansion. We have to improve plant architecture and canopy management. We have to optimize soil water use efficiency through micro irrigation. We have to transit from traditional to high-tech farming. We have to introduce we have to import in internationally accepted varieties and root stocks. We have to multiply root stocks and produce quality planting material in public and private sector through triple P mode. We have to adopt advanced mechanization system. We have to adopt new and latest cold chain concept and creation of more and more cold storage facilities.
We have to use new grading and packaging lines. We have to strengthen our pre and post-harvest management practices on new and latest techniques. We have to introduce effective market intelligence and exploration. We have to build our capacity of our farmers. We have to aware them. We have to aware them about new techniques. We have to introduce farm schools for mass training of our farmers and our students who are learning in agriculture and horticulture universities. We have so many challenges, but by day, by introducing our 5-year plans, by introducing new schemes of central and state sponsored, we are coping up. No doubt, we have in area we are second largest, but in production we are figuring at fifth number in the world. We are trying to become in quality and production second number in the world. For that, our government is trying to introduce and support at each point for new innovations. I am grateful to attend this seminar with you and try to get from sir yourself to introduce some new techniques and get some knowledge from your good self. Sure, Thank sure, you, good sir. Thank you very much for a very, very elaborate description of the challenges from rootstock to varieties to cold storages, canopy management. I think these are really long list, and I'm sure if we work together, we can find some solutions, and hopefully you'll hear some of them in today's event also. So thank you, Bhatt sir, for giving a pretty good description. With that, maybe we can get a farmer perspective from Jitu, who's been working in this space for a long time. Jitu, my question to you, Bhatt sir mentioned about the challenges and what we need to do. I think that we probably all agree on. But the big question is, farmer willing to adopt? Is farmer willing to invest? And all these new solutions on market intelligence, micro irrigation, mechanization, I think they are available, and we have two startups today who will talk about some of these. The question too is, farmer ready to adopt those solutions? Jitu, over to you. Actually, if we talk about 4 or 5 years back, at that time we started with high density plantings and new concepts, modern apple farming. At that time, the people were not accepting this, but now जो भी लोग देखते हैं, सोचते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स कर रहे हैं, उसको देख करके काफी लोग अब आगे आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसी लैंड है जहां पर पहले ही हमारे सीडलिंग ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, उनको चेंज करके रीप्लांटेशन करना नए क्लोनल रूट स्टॉक्स के साथ, नई वैरायटी, नए स्ट्रेन्स के साथ, ये काफी मुश्किल है। पर फिर भी हमारे पास नए लैंड्स हैं, नए एरियाज हैं जहां पर हम नई प्लांटेशन, नई वैरायटीज के साथ और नए नॉलेज के साथ कर सकते हैं। और प्रोडक्शन के मामले में जहां हमारा एवरेज प्रोडक्शन हिंदुस्तान का जो 8 से 9 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर एवरेज है, उसको जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन अगर हमारे बागवान भाई अडॉप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा। और मैं अपनी बात करूं तो मैं 2013 से हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहा हूं, तो उसके जो रिजल्ट हमने देखे हैं, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी और मैनेजमेंट में भी, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम किया जा सकता है, आउटपुट ज्यादा आता है, क्वालिटी अच्छी आती है। तो लोग धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। पर इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग थिंग है वो है कि एक तो प्लांटिंग मटेरियल जो है वो कॉस्टली है, इजीली अवेलेबल नहीं है। और अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, अभी जो इंपोर्ट होता है प्लांटिंग मटेरियल, उसमें भी कई बार ऐसे लॉट आते हैं कि
बागवान भाई पैसे पूरे देते हैं, लेकिन उसमें बहुत परेशानी होती है देख करके कि ऐसा मटेरियल भी आता है क्या। मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ। 2013 में एग्रीबा नर्सरी ने पहली बार एक्सपोर्ट किया था इंडिया को। तो मैंने जब वो प्लांटिंग मटेरियल लिया तो वो फेदर नहीं था, वो विप प्लांट था, और विप प्लांट भी पूरे फेदर कुतरे हुए थे उसके। तो पूरा काट काट करके प्लांटिंग मटेरियल मिला था। तो अभी भी एक बेस्ट क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलना, और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें उसके साथ आते हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम है, उसमें भी अभी बागवान भाइयों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि जैसे मैं जिस एरिया से हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोडू तहसील 120 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर भी अभी इरिगेशन सिस्टम की जो कंपनीज है, उनकी अभी भी यहाँ पर कमी है। बहुत मुश्किल है ढूंढना कि कौन इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करेगा। तो एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी काफी कोशिश कर रहा है, बट फिर भी अभी कहीं ना कहीं एक आम इंसान को, एक आम किसान बागवान को इसकी तरफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ उसको लेकर के आना, अट्रैक्ट करना, और नई वैरायटीज और स्ट्रेन्स की तरफ, और खास करके जो नई वैरायटीज इन द सेंस की रेड डिलीशियस से हट करके जो दूसरे वैरायटीज है, चाहे गाला है, हनी क्रिस्प है, ग्रीन एप्पल्स है, इसकी तरफ लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाए। अभी भी हमारे देश में जो 90% या जो प्लांटिंग्स हैं वो रेड डिलीशियस की लगती है। लोग 33% जो पॉलिनाइजिंग वैरायटीज ऑर्चर्ड में लगनी चाहिए, उस तक को लोग अभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है। बागवान भाइयों तक अभी भी नॉलेज पहुंचने में कमी है। लोगों को अभी भी और शिक्षित करने की आवश्यकता है मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को लेकर के। जी थैंक यू जीतू जी, बहुत ही आपने अच्छी तरह से बात समझाई है। मुझे ये भी खुशी कि अपने काफी सारे फार्मर सुन रहे हैं, तो अच्छा आपने थोड़ा हिंदी में बोला। थियरी सॉरी, वी हैव टू रन पार्ट ऑफ इट इन हिंदी बिकॉज वी हैव lot of farmer friends, so apologies to you because probably you don't understand Hindi, but since we have a lot of farmer friends, so we may have to do some parts in Hindi. No problem. तो जीतू, आपने ये बड़ा अच्छी चीजें बताई कि वैरायटी शिफ्ट करने में प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और ये तकनीकें तो हैं लेकिन वो तकनीकें फार्मर को पता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे जैसे हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो विद दैट आई कैन गो टू अंकुश. Ankush, as I mentioned, heads procurement for fruits at Coca-Cola. We all know Coca-Cola is one of the largest companies in the world. Ankush, from a corporate perspective, what challenges do you face? You know, when it comes to apple procurement, you know, is supply chain fragmented? Do you find it difficult to get good aggregators? Is quality an issue? Processing variety we talked about a little bit, is that an issue? So if you can throw some of these, if you can talk about some of these points, that'd be very useful. Okay, see, we have been buying Apple in India from FIL now for like what, 7-8 years. We started this journey 7-8 years back. We have not bought much because our market is low as of now. But the challenges which I feel, see, overall Apple, if I'm not mistaken, is the third biggest pulp or juiced fruit in the world. Okay, globally there is maybe 20 lakh tons of apple juice which is every year made and traded. India is very small. India is what, 15,000 tons of consumption maybe at max. Now the challenges I see in India is first of all, if you want to grow big in India on apple as a company like Coke, you don't really have enough supplies. Okay, it's a small sector. You always need to back your strategy of security of supplies with some other country. Like for example, I buy apple from Germany, we buy apple from Poland, and so on and so forth. The biggest risk to a big brand is if it starts doing well, can you just rely on Indian apples? That for me is a bigger challenge. On terms of pricing also, there has been a challenge in India. When you import apple juice from other countries and even pay 50% duty on top of it, it is still cheaper than the Indian apple price.
So while we as company have still taken that pricing hit and we have been trying to buy from FIL whatever volumes we need, it still is an impediment to growth for the Apple industry in general. And the basic challenge on that side is the yields on juicings are very low in India. Okay, so you might need X kg of apple in China to make 1 kg of apple juice. In India, you would need 1.3, 1.4 kgs compared to that. 1.3 times of that is what I want to say. So unless and until we correct the apple varieties from a pulping industry, and also I'm not saying that people should grow pulping varieties of apple. The bigger money people make, obviously on the retail side. But when you see any developed economy, I've been fortunate enough to travel to multiple countries to see how apple is managed in general. When farmer grows a fruit, he wants to sell 80% of his fruit to the retail side, right? He doesn't want to give the fruit to the processing industry because that's cheaper and not such a good looking fruit in that sense. But you need both to work in tandem so that the farmer can earn maximum money from whatever he has grown. Unless and until we change some of these varieties and get the best yields in India, the sector will only stay limited to, I would say, Indian consumption. The market is huge. I'm telling you, the market is 100 times more than what India is producing as of now. Maybe 150 times more than what India is producing now. We are competing in the world on mango. We are unfortunately not able to compete in the world when it comes to exporting mango juice from India. We do very well there, but on apple juice, we are not that good. And there is a lot of scope. The scope is, I would say, endless. It's a huge market out. Great. No, these are words of encouragement. Market is 100 times more than what we are doing. So that really shows how much we can go. And also, I think the varietal development is coming out to be a constant theme in today's discussion. Clearly, we need much more varieties, especially for processing, pulping, as you rightly mentioned, for apple juice and concentrate, etc. I think that is a very valid point. And of course, the retail variety will probably continue to dominate, but we need to have some processing varieties also. So thanks, Ankush. I'll come back to you. I'll go to Hitin now. Hitin, I think there is a lot of request for conversation in Hindi, तो मैं हिंदी में पूछूंगा आपसे. नितिन, आपने पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्पल का आपकी जनरेशंस ने देखा है, आपकी कई पीढ़ियां एप्पल से एसोसिएटेड रही हैं. आप क्या चेंज देखते हैं कि मार्केट में क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज हो सकता है? हमने का पैनलिस्ट से सुना क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए. आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव है फार्मर्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रांडिंग. आपको क्या लगता है कि हमारे एप्पल जो के क्रॉप में क्या आवश्यकता है आज की डेट में जिससे कि हम इसके पोटेंशियल को अचीव कर पाए? Thank you, Min, giving me the opportunity to speak about Apple industry. First of all, I want to know how much time I have to speak for this topic. Because I have a complete list. मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है जितनी भी अभी Daliwal, Mr. Thierry has basically raised the issues. Mr. Izaz have raised the issues. Mr. Koshal have raised the issues. Honestly, हमने इन issues को पिछले 2 दशकों में इनको पहले ही जान लिया था 2000 के अंदर कि ये सारे issues हैं इंडस्ट्री में. And that is a progressive success story basically हमारी कंपनी की तभी से बनी क्योंकि हमने इन इश्यूज को उसी दिन अगर आप बात समझ मतलब मेरे जो दर्शक हैं इस समय समझ सकें कि जो ये हम बात आज प्रॉब्लम की कर रहे हैं, सूरी फैमिली ने इन इश्यूज को सन 2000 में एनालाइज कर लिया था कि हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आज भी हैं. लेकिन अगर आप देखें तो सक्सेस स्टोरी निकलती है, सक्सेस स्टोरी निकलती है और सक्सेस स्टोरी थोड़ी मेहनत तो देखो सबको करनी पड़ती है ऑनेस्टली. अभी जब हम इस बात को करें कि जैसे अभी कौशल साहब ने बताया कि हमारे पास लो यील्ड एक्टिविटी है, ऑनेस्टली बिल्कुल सही बात है. लेकिन अभी हमने जूस प्लांट लगाया कश्मीर में और उसके अंदर 650 मिलीलीटर हमारे को एप्पल से जूस मिल रहा है.
which is equal to the global level. तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि लो यील्ड वैरायटीज मतलब लो कंजर्वेशन मतलब जो क्वांटम ऑफ जूस है वो कम है, लेकिन उसके लिए सही टेक्नोलॉजी भी नहीं है इंडिया में. लोगों ने सही टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं किया. द पीपल हु थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी अगर आपके पास सही है तो आपको 650 ml जूस आज हम निकाल रहे हैं. And I want to show these are the two juices. One is a pure apple juice, if you see, and this is the apple juice in a beetroot. They both are Kashmir products. First piece के नाम से है. इसको हमने दुबई में लॉन्च किया लुलु मॉल में. और That's a bag bottle change. And apple chips हमने बनाए. इजाज साहब को बहुत अच्छे से पता है और आपको सुन के खुशी होगी कि हमने 900 रुपए किलो एक्स कश्मीर में एप्पल चिप्स लुलु को दिए हैं और लगभग 1 टन का ऑर्डर है उनका हमारे पास. Congratulate from my side, sir, as you are the second enterprise who after Phil established this apple juice unit in J&K. Thank you, Izaz sir. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए अगर बात करते रहेंगे कभी भी, तो प्रॉब्लम्स तो हमेशा बनती रहती हैं. इट्स इवॉल्विंग. जब आप आज से 20 साल बाद भी हम मिलेंगे तो प्रॉब्लम्स कुछ और होंगी. तो 20 साल पहले की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैं अभी आपको बताता हूं कि हमने कैसे सॉल्व की. फर्स्ट, इफ यू टेक अ राइट टेक्नोलॉजी, हमारे बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स आती हैं उसके लिए जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं ज्यादातर वो कंसल्टेंट्स बनाते हैं. कंसल्टेंट्स का सर्विस पर्पस क्या होता है कि कोल्ड चेन को डेवलप करना या सब कुछ करना, एक उनका एक पर्सपेक्टिव होता है. दूसरा ये होता है कि जो ओनर के पैसे हैं वो कम से कम लगे, जो कैपिटल इंटरवेंशन फ्रॉम द प्रमोटर है वो कम से कम जाए. तो वहां पे आकर के देखिए, जब गवर्नमेंट आपको कोई हेल्प करती है तो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड पे आकर के आपको हेल्प करती है. वो स्टैंडर्ड एक एवरेज स्टैंडर्ड होता है. आप अब कोका कोला जब एक प्लांट लगाता है बॉटलिंग का और जब एक नॉर्मल आदमी बॉटलिंग प्लांट लगाता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है. कोका कोला जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोर्ड की बात करूं, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो फोर्ड का जब प्लांट लगा इंडिया में तो उसकी प्राइस ट्वाइस थी देन व्हाट द मारुति हैड स्पेंट. बट द ओनली थिंग इज द प्रॉब्लम इज द फोर्ड इज एग्जीक्यूटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस. आप मतलब उसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. उन्होंने एक फोकलिफ्ट मंगाई जो कि एक रिप्यूटेड इंडियन ब्रांड से थी, लेकिन उसके अंदर जब वो फोकलिफ्ट ऑपरेटर था तो उसके अंदर उसका जो लेवल था उसकी सेफ्टी का वो 0.99% था, 100% नहीं था. तो उन्होंने वो सारी फोकलिफ्ट्स मना कर दी और अमेरिका से मंगाई, जो कि 27 लाख रुपए की एक फोकलिफ्ट आई जो कि इंडिया में 9 लाख की मिलती थी. तो अब इससे प्लांट महंगा हो गया, एफिशिएंसी बेटर होगी या नहीं होगी उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं. हमने भी जब ये टेक्नोलॉजीज ली, देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जब कश्मीर में पहली लाइन एप्पल लाइन लगाई तो हमने विद एक्सटीरियर उसके अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो ओले का निशान होता है या जो उसके ऊपर काली बिंदी स्कैब की आती है, तो एक्सटर्नल क्वालिटी चेक के साथ ली. जबकि 2009 के अंदर जब हमने वो ग्रीफा से वो लाइन खरीदी थी तो ग्रीफा ने कहा था कि इट्स एन एशियाज फर्स्ट लाइन वी आर इंस्टॉलिंग इन इंडिया. पूरे एशिया में पहली लाइन थी. वो कहते हैं अभी तक हमने जो ये लाइन इंस्टॉल करी है अमेरिका जैसी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में करी है. अभी हमने जो दूसरा प्लांट लगाया है कश्मीर में, ग्रीन वैली एग्रो फ्रेश के नाम से, वो शायद मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता है कि वो पहली एप्पल एंड पियर लाइन है. मतलब दिस इज अ बियॉन्ड टाइम थिंकिंग कि जब हमने वो एप्पल लाइन खरीदी तो हमने उसके अंदर पियर को साथ में इंट्रोड्यूस किया कि वो पियर को भी हैंडल कर सकती है. So these are the progression which is taken by the promoter. आज हम अगर हिंदुस्तान में अपने किसान से जब बात करते हैं तो उसकी थिंकिंग जो होती है कि वो ये कहता है जी मेरे को सस्ते में सारा काम हो जाए, सरकार सारा पैसा दे दे. तो देखिए सरकार सपोर्ट कर सकती है आपको, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा. हमें भी सब्सिडीज मिली हैं, चाहे जूस प्लांट के लिए मिली हो, चाहे सीए कोल्ड स्टोर्स के लिए मिली हो, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी नहीं किया. जब आप राइट टेक्नोलॉजी लेते हैं तो उसका राइट रिजल्ट निकलता है. अब वो राइट रिजल्ट जो है उसका आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं. आज मेरे पास 6000 डब्बे थे कश्मीर के, 6000.
and everything was pre-sold on prefixed price with 100% payment on advance. 1225 रुपए हमारा रेट है जी, कंट्रोल रेट है। मेरे हिमाचल के बागबान भी सुन रहे होंगे, सिर्फ 9 किलो 300 ग्राम उसमें सेब है, जबकि हिमाचल के बागबान इस टाइम 300 से लेके, जो पैक्ड माल इन्होंने स्टोर में रखा है, उनको 300 से लेके 700 रुपए पर पेटी नुकसान है, कईयों को ज्यादा भी नुकसान है। अब देखिए, सेब तो वही है जो मैंने रखा, जो सेब उनके पास है, या सेब कश्मीर में औरों के पास है। असल में क्या है कि जब आप प्लांट लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने से आपको पता लगता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये चीज हमारे को समझनी है और इसको फॉलो करना है अगर आप अपने यूनिट में से प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं। एक तो बात, मेरी बात हुई पोस्ट हार्वेस्ट में टेक्नोलॉजी की। ये दूसरी बात, जो मैं अपने बागबानों की कमी देखी हमने पिछले 20 सालों में, कि उनके पास प्लांट मटेरियल सही नहीं है। जब भारत सरकार ने स्कीम खोली प्लांट मटेरियल की लाने के लिए, तो मिस्टर थेरी अच्छी से जानते हैं, वी आर द फर्स्ट वन टू पुट अप आवर ओन नर्सरी इन कश्मीर, एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कश्मीर में हम ही ने बनाया, जिसके अंदर आज की डेट में सारी लेटेस्ट वैरायटीज ऑफ फ्रूट ग्रो हो रही हैं। मेरे जो हिमाचली भाई हैं, जो हिमाचल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए, हमने स्टोन फ्रूट में क्या इनोवेटिव किए हैं, आप उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आके देखिए। जैसे डोनट पिचीज, जैसे चेरी, मिनिमम 30 mm साइज, 30 mm की मैं बात कर रहा हूँ, 30 mm साइज की हम चेरी बना रहे हैं। तो आप ये सब चीजें आकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या नई नई वैरायटीज पीयर्स में आ चुकी हैं। अब आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। कश्मीर गवर्नमेंट ने बेकायदा वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, किसानों के लिए बनाया, किसान आए और आकर के वो चीजें देखें। जून जुलाई अगस्त बहुत अच्छा महीना है, आप आए उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, हमारी टीम आपके साथ जाएगी, आपको दिखाएगी कि क्या लेटेस्ट वहां पे ग्रो हो रहा है, और आप उन क्वांटिटीज, उन चीजों को खुद वैलिडेट कर सकते हैं। भारत सरकार अपनी तरफ से सब सपोर्ट कर रही है। समझने की बात यह है कि हम उसको कब अडॉप्ट करें। अगर हम आंखें बंद, आप देखिए, मैं आपको सच बात बताता हूं, हमारा किसान बहुत मासूम है, मतलब मैं इनोसेंट बोलूंगा। वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली मुझे काटेगी, खाएगी नहीं। जबकि बिल्ली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी मुंह खोल के बैठी हुई हैं, उनकी ग्लोबल प्रोडक्शन 40 टन पर हेक्टेयर है, हमारी इंडिया की प्रोडक्शन 9 टन पर हेक्टेयर है ऑन दी एवरेज बेसिस। इसमें कुछ किसान ज्यादा भी ग्रो करते हैं, कुछ कम भी ग्रो करते हैं। अब देखिए, लैंड हमारे पास सबसे ज्यादा है, चाइना से ज्यादा लैंड हमारे पास है हॉर्टिकल्चर में, जो हमने लगाया है एप्पल के अंदर। दिक्कत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने इनोवेटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करना है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा था कि कैसे हम अपनी इंटॉक्सिकेशन अपने फार्म से कैसे निकालें, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में पढ़ा हुआ है मेंद्र जी, और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि हमारे पास इंडिया में अच्छे प्रूनिंग की बहुत कमी है। हमारा किसान जो कि फार्मिंग करता है, ग्रो करता है, वो खुद ही प्रूनिंग करता है, या उसके पास एक टीम है कुछ ट्रेन्ड लेबर की, जो प्रूनिंग करने के लिए आ जाती है। प्रूनिंग इज की टू प्रोडक्शन। मैं आपको 100% आपकी यील्ड बढ़ाने की गारंटी करता हूं। कोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप प्रूनिंग हमसे करवाएं, अगर आपकी प्रूनिंग, हम आपको एक्सपर्टीज देंगे, प्रूनिंग कैसे करनी है, हमारी टीम जाएगी आपके ऑर्चर्ड के अंदर, प्रूनिंग करेगी। आप देखिए, आप जो आज 9 टन उगा रहे हैं, हम उसी में से 18 टन उगा देंगे आपको। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी उस टाइम, हमें प्रूनिंग हमें करने देना। अभी जब मैं ये बात बोलता हूं तो उस समय किसी किसी को बात बुरी लगती है कि वो भाई हम क्या एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या हमें आता नहीं है काम कारोबार करना। सूरी साहब को तो सेब बेचते हैं, वो तो आड़ती हैं मंडी के, उनको क्या आती है प्रूनिंग करनी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं प्रूनिंग नहीं करता हूं, पर प्रूनिंग करने के पास मेरे लिए टीम है। देखिए, कोई भी, अब रतन टाटा कार नहीं बनाता, कार तो टीम बनाती है। तो हम भी
एक विजन रखते हैं कंपनी में कि हमने इंडस्ट्री को आगे ले जाना है, तो उसके लिए हमने मेहनत करी। तो अभी मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, कुछ भी उसके अंदर तो पैसे भी नहीं लगने, आपको प्लांट मटेरियल भी चेंज नहीं करना। अब आ गई बात इंटॉक्सिफिकेशन की और ये सारी चीजों की, तो आपको हम उसके लिए भी हमने अभी परसों ही ऐप अपनी लॉन्च की है, ऑर्चर्डली करके, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कश्मीर में ऑपरेशनल हो चुकी है, फ्री सॉइल टेस्टिंग है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, हमारी टीम आएगी, पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट हमने इंस्टॉल करे हैं, 7 मशीनें हैं हमारे पास आज की डेट में। इमीडिएटली 2 दिन में आपको उसकी रिपोर्ट आ जाती है, फार्मर को पता लग जाता है कि उसके यहाँ क्या चीज अच्छी ग्रो हो सकती है, क्या नहीं अच्छी ग्रो हो सकती है। उसको हम पूरी उसकी रिपोर्ट देखिए, ये प्राइवेट है, मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, ये मैं वापस कर रहा हूं उन किसानों को जो मैंने उनसे कमाया है। ऑनेस्टली ये मेरा अपनी तरफ से, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी फैमिली की तरफ से जो मैं रिटर्न कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, पैसा कमाना हर किसी का फर्ज है और पैसा कमाना भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दीज आर द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग एट द ग्राउंड लेवल। हमारा ऑटो चैट सिस्टम है, आप अपने चैट पे कोई भी प्रॉब्लम लिखिए, आपको इमीडिएटली सोल्यूशन मिलेगा विद इन 2 आवर्स। ये चीजें हमने डेवलप करी हैं इन हाउस फॉर द पर्पस ऑफ द फार्मर। बैकएंड के लिए प्लांट मटेरियल आपको कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास पूरी टीम है। These are the solutions for the प्री हार्वेस्ट। पोल का देखिए, एक अगर मैं आपको एक बात बताइए, मेरे कश्मीर भाई हैं, हिमाचल में कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने हाइब्रिड ऑर्चर्ड्स लगाए, मतलब जिसको नई तकनीक के ऑर्चर्ड्स कहते हैं। जाने अनजाने उन्होंने लोहे के पाइप लगाए, जाने अनजाने लोहे के पाइप क्यों लगाए मुझे नहीं मालूम है, पर पूरे यूरोप में घूम के आए, पूरे आप फ्रांस जाएं, इटली जाएं, चाइना जाएं, या तो आपको बांस का मिलेगा पाइप, बांस लगा हुआ मोटा बैम्बू टाइप, या आपको जिसको भारत सरकार ने अब आउट ऑफ और वो भी कर दिया, जंगलात से बाहर कर दिया, आप उसकी फार्मिंग कर सकते हैं ऑफिशियल। या बैम्बू लगाया जाता है या फिर कंक्रीट का पोल लगाया जाता है। अब देखिए इनोसेंस मेरे फार्मर्स की कि उन्होंने जाने अनजाने लोहे की पाइप लगा ली। अब जाने अनजाने जब लोहे की पाइप लगाई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर ये बात आएगी। अब ये मैं इजाज साहब के नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूं कि जिसको उन्होंने आज सब्सिडी दी बगीचा बनाने के लिए, बगीचे की लाइफ हाइब्रिड की 25 से लेकर 50 साल है, डिपेंड करता है वो कैसे ग्रो करता है। अब 25 साल लोहे की पाइप जीआई की स्टैंड ही नहीं कर सकती अंडर द इंडियन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्पेशली इन द रीजन्स लाइक कश्मीर जहां बर्फ 3 से 4 फुट पड़ती है, और हिमाचल जहां पे वाटर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो सेल्फ इरिगेटेड लैंड है, हिमाचल का जितना भी पानी आता है वो बाय एयर वो मॉइस्चर लेती है। तो आप ये देखिए, वो लोहे की पाइप लगा दी, वो ऑर्चर्ड बना दिया, वो सब जो सारी मेहनत की किसान ने, 10 साल बाद उसको पता ही नहीं लगेगा, एक दिन रात को आंधी आएगी और पूरा का पूरा बगीचा बैठ जाएगा, क्योंकि पोल टूट जाएंगे, जंग खाएंगे, उसको पता भी नहीं लगेगा। एक तो बैम्बू एक ऐसी चीज है जिसमें कीड़ा नहीं लगता, बैम्बू कुदरती एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी, वो एक ऐसी लकड़ी है जिसमें कीड़ा नहीं लगता, बांस जो होता है। लेकिन बांस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका इंडिया में इतना चलन नहीं है, उतने मोटी थिकनेस का बांस मिलता नहीं है। दूसरा, हमने जब वो चीज देखी तो हमने देखा कि ये एक पोल 2000 रुपए का पड़ता है जब इंपोर्ट होता है। हमने देखा यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, भारत सरकार इसमें सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी हमें नहीं मालूम है, हमें खुद ही इसके आगे इनिशिएट करना पड़ेगा। हमने पहला इंडिया का पोल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कश्मीर में लगाया। मैं अपने सब कश्मीरी भाइयों को बोलता हूं, आप आइए, आकर के देखिए, अपने हिमाचली भाइयों को बोलता हूं, आप हमारे उसको देखिए, पोल को। इट इज एज गुड एज एनीथिंग अवेलेबल इन यूरोप, एंड आई एम एश्योरिंग यू, मतलब वो बेटर देन यूरोप है। और हम उसके ऊपर 30 साल की गारंटी ले रहे हैं। आपके बगीचे की लाइफ 25 साल, 30 साल की गारंटी हमारी, कि अगर आपका पोल टूट जाएगा 30 साल में, गारंटी, वारंटी नहीं बोल रहा मैं आपको, रिप्लेसमेंट है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अभी हमारे हिमाचल में भी करीब 5000 पोल गए हैं, कुछ वहां के जो प्रगतिशील बागवान हैं उन्होंने लिया है कश्मीर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास 2024 तक के ऑर्डर बुक हो चुके हैं। हिमेंद्र जी, दिस इज समथिंग विच आई लाइक टू गो टू द पैनलिस्ट एंड से कि थिंग्स, कस्टमर इज देयर,
और हम उसकी कीमत सिर्फ 1200 रुपए 1300 के बीच में ले रहे हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन डिस्ट्रीब्यूटर कौन क्या है। आप सब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में, मैं वो नहीं बात उसके लिए बिल्कुल खुला हुआ। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बड़ी इनोवेटिव है, जो शायद पैनल को पता नहीं होगा। ये एक जूस है, ब्रांड है इसका 33, अगर आप देखें, और ये सिर्फ, अगर आप पढ़ें इसको, ये सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस में और विस्तारा में मिलता है। देखिए आप, इसके ऊपर लिखा है नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर टाटा SIA लिमिटेड। तो अब ये हम दो दो जूसेस उनको अभी आज की डेट में दे रहे हैं, एक ये ऑरेंज का है और एक गन्ने का रस का। तो मेरा पर्पस सिर्फ सेब नहीं है कि मैं सिर्फ सेब के फार्मर्स के साथ काम करूं, ये शुगर केन जूस है। अगर आप देखें तो आपको सिर्फ ये चीजें बताने से मेरा मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, किसानों का भी, हमारा भी, और जो इस पैनल में सब बैठे हैं उनका भी। हमें अपने अपने कमरों से बाहर निकल के ही हमारे देश की तरक्की होगी। हमारे पास ना तकनीक की कमी है, ना टेक्नोलॉजी। देखिए दुनिया का आज 10 बड़ी कंपनियां अगर आप उठाएं तो उन सबके आज के चलाने वाले CEOs इंडियंस हैं। तो वेयर आर वी आर लैकिंग। और जहां तक बात हो रही थी, अभी एक मुद्दा उठा था बीच में, अभी ईरान एप्पल का किसी ने डाला है, अभी चैट के अंदर डाला था, मैंने उसको भी पढ़ा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है चैलेंज है, ईरान एप्पल, रशियन एप्पल या जो भी एप्पल्स आप इंपोर्टेड करें, लेकिन आज की डेट में रेट के हिसाब से दुनिया में सबसे महंगा सेब हिंदुस्तान में होता है। देखिए मैं 14 देशों से सेब मंगाता हूँ, सबसे महंगा सेब फार्म लेवल पे सूरी फैमिली इंडिया में खरीदती है, जो कि सिर्फ 650 किलोमीटर दूर मेरे कोल्ड स्टोर से है, मतलब जहां मैं बेचता हूँ। नीयरेस्ट मंडी, मतलब हिमाचल हिल्स जो है, शिमला हिल्स है, वो 375 किलोमीटर है मेरे आजादपुर मंडी से। सबसे महंगा सेब हमारी प्रोक्योरमेंट जो होती है इस साल, जैसे अगर 70 रुपए 75 रुपए किलो हमने हिम फ्रेश, जो हमारा गुम्मा में प्लांट है या रामपुर में प्लांट है जहाँ पे हम अदानी के साथ प्रोक्योरमेंट करते हैं, और जीतू जी को जान के खुशी होगी, इस बार हमने रोडू में भी लगा दिया है। अभी हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे, हमने सारा सेटअप कर दिया है, वहाँ पे मशीन हमारी लग गई है वहाँ पे। तो इस बार हम रोडू में भी आपके लिए, आपके किसानों के लिए एक सुविधा लेके आए हैं। तो अब 70-75 रुपए का मीन्स मतलब ये हो गया $1। $1 में दुनिया में कहीं सेब नहीं मिलता जी, उससे सस्ता ही मिलता है। आप टर्की के प्राइस उठा लो, 30 से 35 सेंट, 40 सेंट। ईरान का रेट उठा लो तो 15 सेंट से लेके 25 सेंट है। अमेरिका का रेट उठा लो तो मैक्सिमम 80 सेंट है। न्यूजीलैंड का रेट उठा लो तो मैक्सिमम 55 सेंट है, और यहाँ पे $1। अब बताइए मेरे किसान भाइयों को कितना खुश होना चाहिए कि उनका सेब दुनिया में सबसे महंगा सेब एट द फार्म गेट बिकता है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है क्वालिटी में। वो भी उनकी ग्रोइंग में कमी नहीं है, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, उनकी सिर्फ अवेयरनेस में कमी है। वो अवेयर नहीं है, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको राइट टाइम पे नहीं मिलती। सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है जी। मैं आपको सच बात, जैसे मैंने प्रूनिंग का बताया अभी आपको, कि हाँ हमारे प्रूनिंग कराइए, आपकी डबल करके देंगे, यील्ड गारंटी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप प्रोग्रेसिव, अब मेरा जो प्रूनिंग करने वाला आएगा वो लेगा 3,000 रुपए दिन के, पर वो आपको डबल प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे जी हम तो 500 रुपए में करा लेते हैं प्रूनिंग उस बंदे से। तो देखिए जो पढ़ा लिखा लड़का जो प्रूनिंग को जानता होगा, जो प्रूनिंग को समझता होगा, उसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के 5 साल किसी यूनिवर्सिटी में खर्च किए हैं उस नॉलेज को हासिल करने के लिए। वो लेबर नहीं है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज हमारा एप्पल बढ़िया क्यों पैक होता है, क्योंकि जब हम पैकिंग मटेरियल लेते हैं उसी पे आ जाते हैं। हमारा किसान भाई जीतू जी इस बात पे बिल्कुल वेरीफाई करेंगे शायद, हिमाचल में जब भी सीजन आता है ना तो रेट हो जाता है कार्टन का, बारदाना महंगा हो गया, ट्रे महंगी हो गई। ये नहीं देखा जाता कि उस कार्टन की गुणवत्ता क्या है। आज 80% जो फ्रूट कोल्ड स्टोर से बाहर निकल रहा है वो सेब का कार्टन बोरी बन के निकल रहा है।
जीतू जी अपने ग्रोवर भाइयों ने जिन्होंने चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी कोल्ड स्टोरों में माल रखा हो, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कहीं, जब वो पेटी बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे बोरी है। वही कार्टन जब यूएसए से 2 महीने में ट्रांजिट होकर के आता है या न्यूजीलैंड से होकर के आता है, 2 महीने पानी का, चिल्ली से आता है, 45 दिन शिपिंग होती है, न्यूजीलैंड से 45 दिन की शिपिंग, वो कार्टन का एक कोना भी नहीं टूटता। अब कारण क्या है? गुणवत्ता। कार्टन सस्ता लेना है। अब कार्टन 10 रुपए सस्ता ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, 55 रुपए की जगह 45 का लिया, या 65 की जगह 55 का लिया, लेकिन उसने आपके 70 रुपए किलो सेब को, जो आपने उसके अंदर 20 किलो सेब डाले हैं 1400 रुपए के, उसकी गुणवत्ता तो खराब कर दी। जब तक वो बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे बिका, या उसको स्टोर कर दिया गया, या वो बारिश आ गई, तो कार्टन बेकार हो गया। पैकिंग मटेरियल, अब अवेयरनेस, यहीं पे मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन मेरे को जो सरकार से चाहिए है, अगर इजाज साहब सुन रहे हैं तो हमें जो सरकार से चाहिए वो ये चाहिए कि वो स्टैंडर्डाइज करें, पैकेजिंग मटेरियल का स्टैंडर्डाइज करें। इससे लो क्वालिटी का स्टैंडर्ड कोई भी कार्टन पैक करेगा, देगा, जो सप्लायर होगा उसको पकड़ा जाएगा, जो यूज करेगा उसको नहीं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, जो दवाई बना के देता है उसको पकड़ा जाता है, खाने वाले को नहीं कि तूने क्यों खाई, मैं खा के मर गया तो फार्मास्यूटिकल कंपनी पे केस होगा। तो ऐसे ही कार्टन के केस में कार्टन वाले को पकड़ा जाए। तो ये छोटी छोटी हैं जिससे हमारी इसमें कोई मेहनत नहीं है सर, हिमेंद्र सर, इसमें कोई मेहनत नहीं। हमारे अगर इस टाइम 250 लोग सुन रहे हैं तो सर वो 250 लोग अगर चेंज अपने आप को कर लेंगे, इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। ये माइंड सेट ऐसे रहा कि मैंने 10 well taken sir, well taken. Absolutely. No, very long list and very comprehensive list. Hiten, it's wonderful to hear your views, and clearly one thing which is coming out, think out of the box. I think that's how the change will come, right? I think that is very, very clear. And with that, I'll probably go to Nitin now. Nitin, Hitin talked about pruning, and how it can impact productivity, almost double it. You have been doing a lot of mechanical solutions in Apple, right, from harvesting to grading, sorting. Tell me your experience, how big it is a challenge for you to solve for Apple problems. Yeah, thank you. I think Hitin sir has already covered most of this, my topic also, but with a very optimistic approach. Thank you. And what I feel is, if I just look at the mechanization overall in Apple industry, we are at a very nascent stage, and the reason being, if you look at all the problems which we are seeing, that the packaging, or if it is productivity, is that our the Apple crop is not very old to India. We don't have that much of history. So if you see, we are evolving, and as we are evolving, we are learning and we are implementing. And if we are able to implement at this particular stage, those changes are going to stay forever. Those the leaders are, their names will be remembered. Talking precisely about mechanization, if I split the whole farming into 4 steps, which is general steps, is first is you have to prepare the land, then you have to sow or plant the material, and then third you have to protect it, the crop protection, and the fourth one is the harvesting. So in overall Indian agriculture, I'm not talking about horticulture, just the mainland agriculture, so we have only achieved about 40%, and out of that 40% also about 80 to 90% the contribution comes from seedbed preparation and sowing, and that is done by tractors. So that tractor becomes irrelevant when it comes to apple or a horticulture crop in a hilly region. So if you remove the tractor out of the picture, so we are left with maybe hardly 10 to 15% of the mechanization labor, and I feel most of the operations are done manually, and we have our own challenges, being I would say they are more opportunity also, because the Indian farming condition for apples are very different from other countries. For example, we have very small farms, and more than having small farms, we have fragmented farms. Our farmers are using now small weeders instead of tractors. Tillers, in hilly areas as well. Yes sir.
So now power tillers have seen a lot of demand and weeders also, because of their versatility to move from one place to another place, and which can be taken into hilly regions also where the tractor cannot go. So those are very relevant solution which will be helpful in land preparation. Then coming to the pruning and the crop protection, if I see in general, pruning is what Hitin sir has already mentioned, is one big gap we are having, which has to be fulfilled, both from the product as well as from the process point of view. How the pruning is done, how it is managed, what time it is done. So all those aspects, as I said, like we are at nascent stage, we are learning, we are evolving. And another aspect is crop protection is hail nets. So the way the hail nets are managed, especially in Sir, in J&K, our pruning is total 100% faulty. 100% faulty. We Right. have to improve this. We have to improve this. Continue, please, sir. Right, sir. So the hail net management is also one big area which requires some intervention. We have designed a product, we have tested it also. We'll be launching it soon, where the hail nets which are put it on the on the orchards, it takes a lot of time, and it requires a lot of manual labor to put it, and it has to be removed at certain time when you need sunlight. So all those aspects, we are building solution around that also. And then comes the harvesting. So harvesting, we have developed a solution which we have tried, and to certain limit we have got success, and we are improvising and relaunching it, which is a very, I would say, customized solution, need-based solution. What is required in our particular orchards. We cannot completely automate it, but yes, with minimum intervention, what can be done, we have achieved. And the last part I'll conclude is the post-harvesting operation. So far, the post-harvesting was not considered as a farm mechanization. But thanks to the Indian government also, last 2 to 3 years, we have seen that they have started realizing the power of what I would say, the importance of post-harvesting operations, and that is also considered under mechanization now. And in post-harvesting, I think the good success story we have in Himachal is the grading sorting solutions. With a lot of entrepreneurs from Ambala, they have put it like small machines. Every household now have this grading sorting solution. Maybe the technology is obsolete, but still, they are able to work with that. There is a need to, upgrade them into color or, optical grading sorting solutions. So this is what the overall scenario I see, and this is what our experience has been so far in Himachal. Most of our work has been in Himachal, and now we are hoping to, have better opportunity in Kashmir also. Great, Nitin. Thanks very much. And of course, you have 2 potential customers here to take your solution to farmers. With that, I can move to Kunal. Kunal, can you switch on the video, please? Yeah, Kunal. I think Cropin is a name that I think most of the people know. What are the solutions from Cropin side for orchard management in particular? Of course, you work across crops, you work across regions, geographies, countries, but specifically for apple orchards, if you can talk about your solution and how farmers get benefited out of it. Yeah, thanks, Simendra. I really love the entire discussion and the learning that was shared through the panel discussion. And what we do, like now, if you see that now we are talking about a base in the state of, say, Jammu and Kashmir, where we are talking about 35 lakh farmers which are working on apple sector, and it's a business of 10,000 crores, right? Now, when we are talking about transformation and when we are talking about positioning the apple sector all together and taking to the next league, right? There are hundreds of these smaller initiatives that are important, right? You talk about from the planting material. Where do you get the right planting material? What is the right time for planting, right? How do you help the crop to grow, during the initial stages of the growth period, right? If you're doing high density plantation compared to a regular crop, how is it different, right? And then the entire process of production, which considers pruning, crop management, nutrient management, pest and disease management, and then further in the supply chain, right? So
if you see from the seedling till the the end customer having a apple on his plate, the entire value chain is such a long, right? And what we do as a Cropin is we really understand that unless we bring change at a large scale level and bring the transparency and knowledge dissemination to all the stakeholders, that overall the overall value addition is not there, right? So first and foremost, what Cropin does is we help digitize the entire agriculture value chain, and it starts with the farmer, right? Who is the farmer? Where is the farmer? How much area he's having under cultivation, what crop is growing, what variety is growing, where is his location, all of that, right? So it fundamentally helps us and the institutions which are working in the entire value chain to know that what is the overall asset that we have. The second thing is that once you know the location of the farmers and what crops they are growing, then the entire practice of knowledge can be shared to the farmer. And we heard about a lot of these practices, and that's what technology basically does, right? If you have a pruning methodology or an institution which is saying that I can prune your crop and I can increase your productivity by 100%, right? That knowledge has to be there in the hands of the farmer, right? And that is exactly what technology does. It brings that particular knowledge to the hands of the farmers. We also then see that there is several other things that is to be done, right? If you see the overall apple sector in Jammu and Kashmir, the biggest problem that the sector is facing is climate change. We are talking about the stress that the plants are facing because of climate change, and the climate change is very location specific. It is very hyper local. So one part of the area may not face a challenge, maybe other part of the area may face a problem. So what technology does is when you have these lakhs of farmers on the digital platform, the technology actually monitors every single farm. We know the location of the particular farm, the geo coordinates of that. We also know the weather condition in that particular plot, and we have a 15-day weather window, for 7 days of past and 7 days of the forecast, and then build a model basis which we are able to predict the pests and disease infestation which a farmer may face, right? So what we are effectively trying to do is reduce the risk of the farmer from any of the damages that is happening in the apple sector. So you're talking about hailstorms, so you're talking about frost, you're talking about scabs. All of this is handled by a predictive and proactive engagement and advisory services to the farmers. So this is one of the components of the climate smart practice, but there are other elements in terms of good agriculture practices, fertigation, recommendation in terms of how to do the pruning and things as I talked about. Once the production process is managed well, it actually impacts the quality and productivity, and that we have already learned. And we have seen in our programs, when we share this knowledge, which is residing within institutions and these private sectors, if you bring it to the hands of the farmers, it can improve your productivity by 20 to 30%, right? Now, once the productivity is increased, the third bit of the piece is that you have to actually take it to market. And if you see the apple supply chain, if you do not know the right time for harvesting, you're seeing because of climate changes, the shift, the patterns are changing, the harvesting patterns are changing, the shifts are happening in terms of overall productions as well. So if there is an increase or there is a decrease in overall production in that particular market, it actually leads to a glut situation. And if we can know that proactively, a month in advance, then the entire ecosystem can be empowered to take the right decision. So planning in advance about procurement, supply chain, market linkage and facilitation on that, this early warning signal about the estimated yield of the apple plantation is also very helpful for not only the institution, but also the government, so that the farmers can be benefiting from that, from a early market intelligence on the pricing part. And finally is the supply chain. When you talk about how you can make your farmers income improve, you can actually make your farms more traceable. And very happy to know that in India, the farmers are earning a lot, but how can you even increase that better? Can you have specialty products certified grower products and take it to specialized markets which can pay a premium for that and make it traceable for the end customer? So the end customer, through a traceability with a scan of a QR code, can actually know the entire journey of the particular apple. And this we are doing at scale, in Punjab, we have partnership with the Punjab government, and we are doing kinnu, we are doing organic crops, we are doing potato, all of those crops in massive lakhs of acres in that particular scale. So I think what we bring to the table is to transform the entire sector,
build partnerships from institutions which are in input side, pruning side, financing side, and market side, and build that entire ecosystem so that everyone all wins together, and we provide that digital environment for that. Thanks, Kunal. Very comprehensive solution, end to end. Clearly, I think there's a lot of digital adoption that we are seeing among farmers, and clearly, Apple farmers, I believe, are progressive farmers, and to take solutions like this to them would be a great, I think, step forward in achieving the vision that we are talking about. So I think we have had one round of discussion with all the panelists. Maybe, of course, we'll have another round. We still have about 40 odd minutes to go. Maybe we take a pause and, get Zunaid's view. Zunaid, you have been listening to all the panelists, some very, very interesting ideas, solutions. And, we started the whole conversation with the vision, 1 billion to 5 billion to 10 billion. If I can ask you, what are the 3 or 4 takeaways, or what are the 3 or 4 areas which we should prioritize to achieve that vision from whatever we have heard so far? To unmute, Zunaid. Mr. Mathur, I would certainly put it, I would put strategic collaboration and knowledge transfer as a key benchmark for achieving what we want to achieve. And I think what all the panelists have spoken about clearly highlights the need for us as stakeholders to collaborate, strategize, and come together for the industry to grow. We are all individual entrepreneurs. We are all individual companies. But to drive change, we have to come together and herald it. We all have niche specialities, distinct specialities, which we built over years, decades at times. We have experience, we have youth, we have innovation, we have a need to change. I think the most important thing is to come together on a common platform. And to me, I think hearing all the eminent panelists today speak about the various solutions that they represent to the industry is part of this knowledge sharing platform that that we are endeavoring to build together at ThinkAg. I do believe that is critical. I think it is important to have a long-term view. As Mr. Kohli also mentioned, Mr. Suri mentioned, this is a long-term endeavor. It is not about tomorrow, yesterday, or 5 months later. We are looking at a generational change, and to that extent, I consider myself lucky to have inherited Apple as part of the family business. I would call it the family DNA, not the business. And I feel this is a generational responsibility for a lot of us to come together and contribute. I do want to highlight that we represent various solutions all tailored to an Indian context. There is also opportunity, adversity, and practicality. And that is India, all of it together, and us striving to make the best of it. So I do believe a common knowledge sharing platform and aim to achieve, certainly the world is the limit. One is certainly the table apple variety, the processing variety, and the processing opportunities that Ankush stressed upon, unimaginable. And I will say we have not even explored the surface yet. So it is time we put our heads together and start scratching the surface there. If we are not even catering to what is 1% of the global industry's demand, and we aim to be manufacturers to the world in a lot of endeavors under Make in India, this is one clear opportunity. We have the land, which is the most important commodity in this endeavor. So I would sum up the discussion so far really in summary in saying, I think a platform like this is really giving all of us an opportunity, the industry, the entrepreneurs, the farmers, the policymakers, to come together on a common platform
but what is important is to put together a common vision, evaluate it, monitor it, execute it, and then take it from there. Right, very well said. The strategic collaborations, absolutely. I think we all are doing a bit, but if we come together, the power could be much different. So with that, Mathur sir, I have one word. Mathur sir, can I? boliye brother. Sure. I am thankful to Suri sir, Junaid sir, and Ankur sir and other speakers. We have got so much new things, especially Coca-Cola. But I request these big companies, they can give us this a boost to our Apple industry. We people are manufacturers of pesticides, but when we manufacture pesticides, they are not up to the mark. They destroy our whole industry. When they come to us, we tested them, then we share with farmers, but that time they have utilized these things and their orchards have a bad impact of these things. Every stakeholder should positively contribute to support this industry. This industry give us not only employment, but we can get best products in the form of juice, in the form of jam, in the form of other processed products. We say world class products. Our products are much products are organic products. We have to focus on organic farming as well. But everyone has to share his role. हम कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत. Suri sir has started this venture, but started very late. It should be have earlier. Government has started high density, but it is little late. No doubt, देर आयत दुरुस्त आयत, late ही है, but it is good for our future endeavors, our future generations, our future economy. It is very much encouraging. We hope and pray that every stakeholder, especially those businessmen who are dealing with the business of Apple, they should have a good role for improving this economy, and they can guide us. They can guide us. They can give their their feedback to government. Government can't do in isolation things. We need the feedback from these aggregators, from our heroes. Those are farmers. I salute them. They are the real heroes. We always say these schemes, these programs are not complete till we encourage our farmer. There are so many schemes. There are so many ways for a farmer to take new technology. Our government have no lacuna, no dearth of funds. We have abundant of funds. So I have myself a challenge to invest, to spend maximum funds for the benefit of our farming community. Our farmers also should know. They should join these programs. They should join awareness programs and go and took this mission forward for the benefit of general community. Thank you, sir. Thank you, sir. Very well said, sir. And I'm sure all the farmers are listening. They will be very keen. We're already seeing a lot of interest in the chat box. I think Ankush wants to come in at this stage. Ankush, please go ahead. मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन था which I wanted to understand. Yeah. ज्यादातर आजाद साहब से था कि सर ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो हम बात कर रहे हैं अभी, आई थिंक ज्यादातर लोगों ने इस रूम में सुनी, ये मतलब 5 साल 10 साल पहले सुनी होगी. मतलब आई एम नॉट अ फार्मर, आई स्टे इन दिल्ली, पर मुझे भी ये कन्वर्सेशन की हाई डेंसिटी प्लांटेशन करनी चाहिए 5-7 साल पहले पता थी. मेरे को जो समझ में नहीं आता है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि ये इम्प्लीमेंट एक्चुअली में ग्राउंड पे क्यों नहीं होता है. लाइक आपने भी बोला कि प्रूनिंग हम गलत करते हैं, राइट? अब आपको पता है हाई डेंसिटी भी करनी है, फिर भी हमारा जो आई वुड से जो एडॉप्शन रेट है कि हम कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं हाई डेंसिटी में, वो
मेरे अपने व्यू में, एंड आई कैन बी रॉन्ग, स्लो है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि फिर अगर इसमें सब कुछ फायदा ही है तो फार्मर करता क्यों नहीं है इसे? Yes, I will reply your question, sir. बेसिकली जो ये मॉडल है, ये उत्तराखंड में भी चल रहा है, शिमला में भी चल रहा है और J&K भी में चल रहा है। ये पिछले 3, 4 या 5 साल से चल रहा है। अभी हमारा फोकस नर्सरी डेवलपमेंट की तरफ नहीं रहा। हमने इंपोर्ट किया। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा प्लांटेशन में होता है। तो अब हमारी सरकार ने पिछले 1-2 साल से नर्सरी डेवलपमेंट स्कीम की है। मैं अगर J&K की बात करूंगा, हमने एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इशू किया है टू प्रमोट नर्सरीज। ये एक बुकलेट भी हमने किया है। तो हमने आज की डेट में 300 नर्सरीज को रजिस्टर किया है। तो उसमें हम इंसेंटिव दे रहे हैं, 50% सपोर्ट सरकार दे रही है हमें। J&K में आज की डेट में 12 लाख से ज्यादा कुल रूट स्टॉक जो हमने इंपोर्ट किए हैं इटली और हॉलैंड से हमारे पास है। हम इन जो एंटाइटल हैं एज पर स्कीम उनको हम दे सकते हैं एट नॉमिनल रेट्स। और हमारी सरकारों की अब यही है, नॉर्थ इंडिया में चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे J&K की बात हो, हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस हर जगह अब नर्सरी डेवलपमेंट पर है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले सालों में हमें कोई दिक्कत होगी प्लांटिंग मटेरियल देने में ग्रोवर्स को, क्योंकि अभी जो चैलेंज है वो वही प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास उतना नहीं है कि हमारे किसान जो है वो कन्वर्शन की तरफ जाएं। न सिर्फ हम एप्पल की बात कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे दूसरे वॉलनट है या स्टून फ्रूट हैं या आलमंड हैं, वो नॉर्थ इंडिया में हर एक स्टेट के लिए सूटेबल और फिजिबल हैं। हमने वो टेकअप किया है थ्रू नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, थ्रू सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि हम अगले 5 साल में ऑल नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन लैक्स। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम इसमें सेकंड नंबर पर आएंगे आफ्टर चाइना। Great. बहुत Thank बढ़िया you. सर, थैंक यू। Thank you. With that, maybe I can go to theory. Zunaid talked about strategic collaboration as the way forward, right? And I think we also touched upon issue of planting materials, high density plantation. How a group like Daliwal Group, which has so much of knowledge, how you can bring these practices, these varieties, these planting materials, and how do we collaborate, together, not just in India but internationally? So that's my question for you. Okay, thanks to let me speaking. In fact, to understand Dalival is very specialized in pip and stone fruits, and all the strategy of Dalival since now 40 years or 30 years is to go locally and to think local with a worldwide thinking. We've got 3 activities, and one is the core business is genetics innovation. We are working since now more than 40 years creating, testing, developing new rootstocks, new varieties, mainly on apple and pears, but also now on stone fruits. And we manage program worldwide. We work with more than 70 partners now in the world. We've looking for genetics where we can finance program adapted to climate, like hot climate, like climate where you need low shading plant material, or cold where you've got a lot of frost. So we have some program adapted in some countries like Chile, like Romania, like South Africa, like China now, or New Zealand, just to have genetics very adapted. And when and that's the first business, and the first activity, which is something that we bring when we can in some countries that we will do now in India. The second activity is the nursery. The plant material is something very important about the sanitary aspect. We need a virus-free material. We need also the good rootstocks to work with, the good adapted rootstocks to work in certain type of soil, certain type of production. We need also the good varieties adapted to the consumers of the country, to adapted also to the climate where we can grow it, and that's very important, a very important point.
And we work as a nursery mainly in Europe with our own production, but also we've got subsidiaries in different countries in Europe, like Netherlands, like Italy or Czechia or Poland. But now, since 4 years, we are in China, and we will be now in India with Filaval, in order to think like a corporate social responsibility spirit, where we are with since a long time, to produce locally, bringing the best we can to help the business, the farmers, the marketers, the consumers locally, without exporting on bringing value inside the country. So we were wanting to be in India since now 6-7 years. We took time to find partners, time to find where to do, where to go, how to do. And we have created now, since it's very young, since 2 months, a company, Filaval, with Phil, with Junaid here, and also with Fiats, bringing all together our own experiences. And the objective here is to create with time. We work on long time strategy, not a short time, to bring to develop the good genetics, the good rootstocks, especially M9, but we think there have some other rootstocks which could be better on replant situation, for more people who don't want to go to intensive orchards, but some people want to stay in extensive, to be in intensive with different parameters that we can find on for each farmers. But also, so we want to install, we will put some stool beds, but also to bring some trees with the good varieties. What is a good variety? It's very huge. You can have a lot of good varieties. What is an adapted varieties for India? It's also a big question. We have some ideas, but clearly we need some varieties which have a possibility to store well, because one of the issues you have is also the storage for parts. The infrastructure is increasing. We see we have more and more good storage, but not enough for all the production. And to have a good variety with a good storage, with a good coloration, with a good taste, with a consistent taste, with no problem of sunburn, with etc. There's a lot of things. There's no perfect variety, but you have varieties that can bring better and better results on solution for the farmers, like scab-resistant varieties, for example. We have a lot of huge catalog of scab-resistant varieties that can help tomorrow the producers on the long term to produce better for also consumers. So this platform will be is in place. It will take time because we want to do it in all the good way, not to do serious things, but it's a real good project, nice project, social project, human project, business project also, to help your country. And it's a big challenge, but a very big pleasure to do that with my partners and with all of you in India. Thanks, here. Filaval is a great start, I must say, as a joint venture between Dhaliwal Group and Phil. Yeah, great. I think absolutely. I think it could be a platform for bringing the best variety suited for Indian market to India. Maybe with that, I can go to Jitu. Jitu, you heard a lot of solutions. I think one thing which I want to ask very specifically, Kunal talked about digital solutions. If you want to give farmer advisory, for example, on a phone, that's about weather, about soil health, about crop health. Are apple farmers ready for that? I'm assuming a lot of them probably already have a smartphone, but are farmers ready for this digital adoption? Because they are typically very comfortable meeting someone physically, an extension worker, a university person, right? But if you build a digital, because digital ka reach bahut hai, you can go to thousands and millions of farmers, right? So what is your take? You being a progressive farmer, do you see a potential for digital solutions for apple orchards? You have to unmute, Jitu. Jitu, you have to unmute. जी, आवाज आ रही है सर? Yes, go ahead. जी, थैंक यू सर. एक्चुअली मैं पिछले
8-9 साल से एप्पल इंडस्ट्री के अंदर बागवानों को ट्रेन करने में, बागवानों के साथ प्रैक्टिस शेयर करने में लगा हूं। तो अभी 1 साल पहले हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, जो बागवान भाइयों को घर बैठे बागवानी की आधुनिक तरीके सिखाता है। इसमें हम एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं और जिसमें लोग अपने अपने घर से फोन के माध्यम से जुड़ते हैं और उनको हम बागवानी की जो बारीकियां वो सिखाते हैं। एक्चुअली जो कमियां है वो इसमें है कि जिन लोगों को मालूम है, आज हम बैठे हैं यहाँ 8 लोग 10 लोग बैठे हैं, यहाँ हमारी बातचीत होगी, लेकिन जो रियल फार्मर है वो घर में है, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। अगर जैसे प्रूनिंग की बात सूरी साहब ने की कि प्रूनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो प्रूनिंग ये सही है, प्रूनिंग अच्छी होनी चाहिए। लोगों में गलतियां हैं, लोग प्रूनिंग सही नहीं कर पाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि फंगल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए करोड़ों रुपए का फंजीसाइड हम उड़ाते हैं। कश्मीर में अकेले 30-40 करोड़ का फंजीसाइड 1 साल में लगता है, लेकिन स्कैब की जो प्रॉब्लम है वो जस की तस है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस है वो उसमें फार्मर्स लैकिंग है, और उन तक ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में केमिकल कैसे यूज किए जाएं, पेस्टिसाइड का यूज कैसे होगा, इसके साथ साथ जो नेचुरल सोर्सेज हमारे पास है, हम सनलाइट का कितना यूज कर रहे हैं, हम एयर सर्कुलेशन कितना बना रहे हैं, कैनोपी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हम फ्लोर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हम नेचुरल सोर्सेज जो फर्टिलाइजर के हैं उनके ऊपर हम Sir, कितना। I am representing 40 lakh people जी of सर। my farming community. Whatever I get from experts, I am sharing through radio, through social media with my each and every farmer. Especially, I went to Uttarakhand, and there was a proposal from government to intermingle horticulture with agriculture. तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां दी कि दिन ब दिन, डे बाय डे, हॉर्टिकल्चर इज एडवांसिंग, तो इसको सेपरेट रखने की जरूरत है और ज्यादा इसको प्रमोट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करने की जरूरत है। तब जाके वहां के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां के कंसर्न मिनिस्टर को बुलाया, बोला इसमें मुझे डिस्कस करना है, हम इसको इंटरमिंगल नहीं कर सकते हैं। यू गो अहेड प्लीज। जी, तो यहाँ मुझे लगता है फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स आते हैं, अपनी प्रैक्टिस शेयर करते हैं, तब से लोग जानते हैं, लोग अब समझने लगे हैं धीरे धीरे। हमारे जैसा ऑनलाइन कोर्सेज है तो इसके साथ लगभग 3 से 3,500 लोग जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से भी हैं, कश्मीर से भी है, हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, इसके अलावा साउथ इंडिया से भी है। तो लोग जो है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में लोगों को दिक्कत है। हमारा देश का जो समाज है वो पढ़ा लिखा है, गांव में भी जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब जैसे हम अभी देख रहे हैं 181 लोग जुड़े हैं, और थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे 250 लोग जुड़े थे। तो ये फार्मर्स ही हैं, 240 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए वो तैयार हैं। दिक्कत ये है कि उन तक ये चीजें पहुंच जाए, अभी ऊपर ऊपर चीजें हैं, उन तक जब पहुंचेगी तो लोग जरूर आगे आएंगे। पैसे की भी कमी नहीं है, लोग, फार्मर्स के पास पैसे भी हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं अब, लेकिन उन तक इंफॉर्मेशन जैसे जैसे पहुंचेगी, उन जैसे जैसे ये इजी होगा, सारी चीजें नीचे फार्मर्स तक पहुंचेगी तो लोग अडॉप्ट करेंगे। राइट। जी नहीं, बिल्कुल जीतू जी, आपने बड़ा अच्छा बताया, और बहुत I'm very pleased to hear that farmers are willing to adopt, right? That is the very, very important point. I think I can take the same question to Hitin. Hitin, Jitu talked about digital adoption at the farmer level. What about the trade? You know, you deal with wholesaler, traders, mandi players, retailers. Are they digitally ready to order? And I remember, if I am correct, you launched the app very recently. So that's the question for you. I will start with your question, but I will come with the many more questions to the panelists, because I heard them and I want to know a little bit more about my own experience. So first of all, your question regarding the wholesale cash and carry business, मतलब जो आज की डेट में मंडी का व्यवहार बिजनेस जो चल रहा है, तो एज अ सूरी एग्रोफ्रेश हमने इस आइडिया को 2 साल पहले अपने
मतलब सपने में या जहन में या कंसीव किया इंग्लिश में कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हमारे किसान भाई और जो हमारे जो अन्य जो भी इस वैल्यू चेन के अंदर जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे ये सोचते हैं कि मंडी तो पता ही नहीं है क्या है, सिचुएशन क्या है आज की डेट में। तो हमने ये ऐप लॉन्च की अभी आज से करीब 41 दिन 42 दिन पहले। तो इस ऐप का नाम SAF ग्रीन है, सूरी एग्रोफ्रेश ग्रीन। कोई भी किसान भाई इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है इनफैक्ट, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ऑर्डर सिर्फ होलसेलर या दुकानदार जो एक छोटा परचून दुकानदार है वो ले सकता है, और या उसके अंदर कोई बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे फ्रूट का वो ले सकता है। अभी ये ऐप जो चल रही है दिल्ली NCR में चल रही है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि उसके ऊपर 10,000 ऑर्डर आज दिन तक आ चुके हैं और लगभग हम 5 करोड़ का बिजनेस ऐप के ऊपर किया है हमने। सिर्फ ऐप बेस्ड बिजनेस, अदर देन हमारा जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। तो इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी हमने मतलब जो पारदर्शिता लाए हैं वो इस प्रकार की है कि कोई भी फ्रूट, जैसे आज हिमाचल सेब, कश्मीर सेब, जैसे हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है जिस दिन, तो वो उसके अंदर दिखता है और वो दुकानदार उस चीज को ले सकता है, चाहे वो इंपोर्टेड हमारे प्रोडक्ट्स हों या कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स हों, जैसे इंडियन अंगूर, स्ट्रॉबेरी, जो भी चीजें हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं जो सूरी एग्रो सोर्स कर रहा है। इवेंचुअली इस प्लेटफॉर्म को हम एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं जिसके अंदर जो लोग और भी हों इंडिपेंडेंट अपना फ्रूट लाके बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो सर्टिफाइड बायर्स ही, मतलब जो अपना फ्रूट बेच सकेंगे वो सर्टिफाइड होने चाहिए। हम जो ब्रांड है वो सूरी के नाम से माल बिकेगा। तो पारदर्शिता हमें उसकी जब तक नहीं होगी, वो कौन से पैक हाउस से पैक हुआ है या कैसा हुआ है, तब तक हम उनको अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी ऐप को यूज प्लेटफॉर्म को नहीं देंगे। लेकिन हमने उसको, जो मकसद है ऐप बनाने का, ये है कि थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिले। इस ऐप के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आज जो छोटा दुकानदार है दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर, उसके पास गुणवत्ता वाला जो प्रोड्यूस है उसको बड़ी कंपनियों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। बड़ी कंपनियां प्राइस रिडक्शन पे माल बेच देती हैं, सस्ता करके बेच देती हैं। और आपको ये जान के शायद मेरे ख्याल से जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे मार्केट को नहीं समझते, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और दुनिया के अंदर सबसे महंगा फ्रूट अगर कोई बेचता है तो वो बेचता है रेडी वाला, सिंगल शॉप ऑनर। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो सिंगल शॉप ऑनर, और हिंदी में बोलूं तो सिंगल रेडी वाला जो होता है ना, वो सबसे महंगा फ्रूट बेचता है। तो अगर वो फ्रूट मेरा एक्सेप्ट करता है, जैसे कि जो मेरे इंजॉय ब्रांड एप्पल्स हैं, या मेरे आज की डेट में वो ब्रांड एप्पल्स हैं, या अभी मेरा एक मैंड्रिन है आज की डेट में, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे 1800 रुपए का सिर्फ 9 किलो है। 1800 रुपए का 9 किलो संतरा, कीनू जिसको, जो राजस्थान में होता है, पंजाब का होता है, पंजाब का कीनू 450 रुपए का बिक रहा है, लेकिन मेरा कीनू 1800 का बिक रहा है। अब मेरे कीनू में क्या खासियत है, ये तो जो खाएगा उसको पता लगेगा, और जो खाता है उसको वो लेना भी चाहता है। जेस्परी की कीवी है, और इटली की कीवी है, और भी कई ब्रांड्स हैं कीवी के जो हम बेचते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि कस्टमर को पहले पता नहीं होता था कि कीवी एक्चुअली में रेट क्या है, तो उसको पता नहीं चलता था कि मैं क्या भाव में खरीद रहा हूँ, क्या पारदर्शिता नहीं थी। अब उसको पता है कि सूरी साहब की दुकान से वो कीवी 35 रुपए की आ रही है, अगर वो किसी दुकान से 50 रुपए का ले रहा है तो उसको इमीडिएटली पता है कि 50 रुपए की चीज, मतलब 35 रुपए जो होलसेल में है वो 50 की मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल लेता हूं कि जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तनिष्क पे या किसी अच्छे ज्वेलर की दुकान पे, तो आप पहले इंटरनेट पे गोल्ड का रेट चेक कर लेते हैं। जैसे आज 52,000 रेट है गोल्ड का, आपने कोई ज्वेलरी लेने गए, आपने ज्वेलरी खरीदी, तो तनिष्क ने कहा भाई 52,000 रुपए का गोल्ड है, मतलब आपने जो 22 कैरेट 24 कैरेट का जो रेट होगा वो लग जाएगा, और उसके ऊपर 10% मेकिंग चार्जेस, या कोई और ज्वेलर भी होता है वो उस हिसाब से ले लेता है। तो उसको लेने वाले को समझ आ जाता है कि मैं इतना मार्जिन इस दुकानदार को दे रहा हूँ। तो वही पारदर्शिता हमने इस बिजनेस में लेके आए हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे फार्मर को भी है, क्योंकि जिस फार्मर का मैंने सेब 70 रुपए 75 रुपए सीजन में लिया, तो अगर उसको पता लगेगा आज मैंने 110 रुपए का बेचा,
तो या 115 रुपए किलो बेचा या 120 रुपए किलो बेचा, तो उसको भी पता लगेगा कि सूरी साहब ने अगर उस टाइम मुझसे 5 रुपए किलो महंगा लिया था, मतलब हम हिमाचल के अंदर हम बदनाम है कि हम सबसे महंगा सेब खरीदते हैं, लेकिन हम सबसे महंगा बेचते भी हैं। अगर हिमाचल में सबसे महंगा सेब खरीदते हैं, हमारा रेट और कंपनियों के मुकाबले 1-2 रुपए 3 रुपए महंगा होता है, लेकिन हम चीज भी बढ़िया लेते हैं और चीज भी बढ़िया बेचते हैं। तो वो एक टेंडेंसी है कि भाई ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो बढ़िया ही लेना पड़ेगा। तो वो ये पारदर्शिता जो हमने लेके आए हैं, ये बेसिकली ट्रेड के अंदर मिसिंग थी। किसान को पता नहीं होता था क्या रेट चीज बिक रही है, उससे उसको प्लानिंग नहीं होती है और वो उसके आगे जान नहीं सकता। ऐसे जो छोटा दुकानदार है उसके लिए भी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हमने इसको ले आए हैं और आने वाले समय में हम इसके अंदर जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, वो शायद ऐसा होगा जो कभी किसी ने ना सोचा होगा, ना देखा होगा और ना समझा होगा। We are talking beyond times. We are talking something which is nobody's thinking about it. Yeah, I think I can leave the last word with two startups who are there on the call, Nitin and Kunal. You have talked about your solutions and you have all the stakeholders on this call. If you have to take this solution to, let's say, even 20% of Apple farmers, what support do you need? Nitin, you first, and then maybe Kunal can come in. So I think a lot of the stakeholders are already present in the valley, and I mean both Kashmir and as well as Himachal. Uttarakhand is of course very small for trying out a new product. So what we have seen is Himachal farmers are a little bit more progressive. I won't say we have seen the technology adoption happens in Himachal a little earlier. So if we have to reach out to all those stakeholders, I think the people who are already there in this market, they can help us in maybe promoting the technology. We have seen that, maybe the marketing channel or the sales channel can be what is already existing, which we have seen at least in the manufacture this mechanical products. We have seen that already there are input shops which are there, retail shops which are there, so they could be a good sale point which should be a traditional sale point, but promoting the product through marketing or educating, like what Jitu Bhai is doing through their institutes. So I think that will be a great help for new products like us. So I'll tell you, the kind of products which we are working on is, let's say, the problems, if you see, those problems look, completely invisible when we go to the orchards. For example, many of the farms, many of the orchards are towards the, bottom of a hill. And there is a long way down when we are going down, and those apples have to brought up on the road. So imagine the weight of those apples, and these all are the loaded baskets, the labor put it in the back and then they climb it and they bring it up. So these are very, I would say, specific problem to our Indian conditions, especially in the hilly regions, more of Himachal and Uttarakhand. So these are the problems on which we are working, and I think very I would say crop specific, need based products, and very relevant to our farming conditions. So I think the support if we can get from the industry leaders and also the farmer leaders like Jitu Bhai to promote our products among the farmers, to educate them, and the sales channel could be traditional channels. Sir, you're on mute. Thanks, Nitin. I think these are very specific asks. Kunal, anything from your side? Yeah, so I think one of the things that I clearly resonate is the collaboration architecture that should be there. If you want to really transform, अगर हमें बड़ा change लाना है तो हमें साथ में change करना पड़ेगा. And ये बड़ा change वो 35 लाख farmers के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं, जो कि हमें एक next revolution पे लेके आए. So one of the things that could always happen is that हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या problem हो रही है और कैसे उस problem को हम solve करें.
At institutional level, we can focus on smaller chunks, like maybe you can talk about thousands or hundreds of thousands of farmers. पर जहाँ पे हम 35 लाख किसान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. And I think the government can bring not only newer varieties, but also protect the farmers from improving their quality, improving their quantity by sharing the knowledge which is there. तो आज हमने जो फोरम में बात की है, बहुत सारे नॉलेज है, मुझे भी सीखने को मिला काफी चीज. बट यहाँ पे हमने 250 लोगों का प्रेजेंस देखा, पर वो 35 लाख लोगों तक की इंफॉर्मेशन नहीं है. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉलेज सभी के पास होनी चाहिए तभी. और फार्मर अपने खेत के लिए वो खुद ही एक साइंटिस्ट होता है, उसे पता है कि क्या काम चल रहा है, नहीं हो रहा है. तो अगर हमें वो सारे इंफॉर्मेशन को ले जाना पड़े उन फार्मर्स तक जो हिली टेरेन में, जो जिनको अपने घर से, अपने फार्म से यहाँ पे आने में उन्हें आधा घंटा 1 घंटा समय लगता है, उन सारे टेरेन में टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दूसरा फायदा ये है कि जब हम किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लर्निंग्स, क्योंकि फार्मर चेंज नहीं करता है, आसानी से चेंज नहीं करता है, दैट वी हैव हर्ड लाइक फ्रॉम जनरेशंस इट टेक्स. इट्स जस्ट लाइक एप्पल फार्मिंग, राइट? सो अगर हम सक्सेस स्टोरीज को बहुत सारे किसानों तक लेके जाएं तो वो सक्सेस स्टोरीज पर रेप्लिकेट होता है, फार्मर्स उसको अडॉप्ट करते हैं. वो पहले अपने एक छोटे से फार्म में शुरू करेगा, छोटे से खेत में, फिर वहां से वो अपने पूरे फार्म तक ले जाते हैं. This is across the world, this is what happens, right? And we know that, right? So I think as a technology company, we have really seen the power of collaboration. क्योंकि जब आप किसान से काम करेंगे तो वो बोलेगा कि मैं ये हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जाने के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए. अब मुझे एक फाइनेंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कि आके उसको सपोर्ट कर पाए. फिर there could be like insurance, there could be inputs, there could be market. So I think that is the role where all strong institution, all service providers can come together and everyone will have his fair share of the value, right? And that is what we see is the core motto. अगर हम per acre value को increase करें तो farmer को तो benefit होगा ही, पर सारे stakeholders को benefit करेगा, और technology इसमें बहुत important role play करेगा. So इसलिए my humble request to all of us over here is that there are technologies in pocket, but let's use technology in as all possible means, not only for today but also for the future. Great, Kunal. Great way to sum it up. Clearly, take this solution. How to take this solution to 35 lakh farmers is the motto, and I don't think anyone of us individually can do it. Clearly, collaboration, partnerships are key. I think one thing which is coming out very clearly in this forum, we can debate a lot of issues. We may agree, we may disagree, but ultimately, I think we need to work together. That's the ultimate goal. And that's the intent of organizing this forum. And we want to do more to bring multiple stakeholders together. So I think we are out of time. I just want to say a big thank you to all the panelists. I think it's been a great discussion. Thierry, Ankush, Bhatt Sahab, Jeetu, Kunal, Nitin, and of course, Zunaid for anchoring the effort. I think it's been a great discussion. I would say great start. And with that, I thank you on behalf of ThinkAg, and we want to do more of these conferences, more of these forums. Please come forward and support us, guide us on the agenda. How do we do it? Zunaid, you can conclude if since you have put it together. I'll leave last word to you. I think big thank you to everybody. What I'll just stress on again is we are one family. The approach to growing the family can be different, but the family always grows. I think that is the approach we should take to growing the industry and growing together. Thank you, everybody, once again. Have a good evening. Sorry. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.